As the Andhra Chief Minister N. Chandrababu Naidu completes 1 year in office, his party is firefighting a major controversy over Bribegate. Now, in sensational twist to that case, a leaked audio of an alleged conversation between Naidu and nominated MLA Elvis Stevenson has created quite a stir in the state. But the Chief Minister claims that the tapes are doctored. The Congress, though, is still demanding Naidu's resignation. Chief Ministers met the governor today, the governor is a common governor for both the states for another 10 years. And both Chandrababu Naidu complained to the governor that his phones are being tapped by the TRS government, and they claim that this is not only unconstitutional but is also a violation of the act. Now the TRS government is claiming that it is not a sting operation. They have is part of the investigation by Anti-Corruption Bureau, and through this investigation they got hold of this audio tapes where Chandrababu Naidu, allegedly Chandrababu Naidu was trying to confirm with Elvis Stevenson that he did not worry about anything in case someone comes to know about that he has abstained or voted for TDP, he will be taken care of or he will be rehabilitated in Andhra Pradesh. Now it needs to be seen that the audio tape has been submitted to the court by the Anti-Corruption Bureau. From here it now needs to be seen the authenticity of the tapes, which will go for forensic analysis and stuff, which will come out, and after that the ACB will have can summon Chandrababu Naidu in the case, or in other case can we make him as accused in the case in the FIR. Now the thing lies with the governor, where the governor gives the permission for the sanction of questioning of Chief Minister or prosecution of him. But the governor has asked the TRS government to not to be in a haste, and if they have to proceed only when they have very concrete evidence, so that we can link Chandrababu Naidu to the cash for vote scandal. Well, in fact, the Congress and the TRS both are adamant that the voice on the tape is that of Chandrababu Naidu, and not only should he resign from his post, but also criminal investigation should be launched against him for corruption. Well, this is something that you should be asking the BJP. That is the government. This is the government they said will be scam-free. Well, right in front of you, what the Congress has been saying, that they made all these promises before they came to election. Today, you see it is playing out an audio in fact, in your channel and other channels. If you see 30% of the cabinet themselves in the form that you have to sign in, have said they have criminal cases against them. So what is this scam-free government that they speak about, BJP? Things are unraveling, and the day they make RTI, CVC and all these appointments are in place, you will see the kind of corruption that is playing out in this government. The involving of the Chief Minister, where this money has come, whatever the conversation also, in the tape, the people are saying that TDP side there is official spokesperson or whatever it may be, representative of the Delhi. He is saying that it is not his voice. Chandrababu voice is not correct. It is not his voice. It is only tampering the voice like that. So all this episode, what they are saying, it is only personal victimization of the Andhra Chief Minister by Telangana Chief Minister KCR. Now that with an alleged tape coming to the forefront, there is a war between the TRS and the TDP. We are seeing as to how both are alleging against each other. One fraction saying that the TRS has illegally, in fact, tapped the phones of the Chief Minister, the ministers, the MLAs and bureaucrats of Andhra Pradesh, and those in Andhra Pradesh saying that, those with KCR saying that some kind of bribery attempt has been done. Definitely under such scenario, the law should take its own course. No one who has erred as per the rule of this land should be spared. वो सीबीआई वाले इंक्वायरी करें ना, वो कब समन इशू कर देगी, कब क्या कर देगी, वो लोगों को मालूम, हमारे को नहीं मालूम. हम आज पेपर में देखे. लेकिन सर टीडीपी ने भी एक ऑडियो रिलीज किया है जिसमें बात हो रही है कि टीआरएस एमएलए वायरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वाईएसआरसीपी में है, उसमें 3.5 करोड़ रुपए दिया गया है. वो हमारे नहीं मालूम है. अब तक हमारे पार्टी वाले वो ऐसे काम नहीं करते. कहीं को करना, हमारे फुल सफिशिएंट स्ट्रेंथ है हमारे को, हम कहीं को करना.
सर चंद्रबाबू नायडू के समन होंगे सर इस केस में, क्या उसको बुलाया जाएगा? तो सीबीआई पे क्या करते हैं वो लोग सोच के क्या कर रहे देखेंगे, कि नहीं बोल सकते ना। So what is the audio clip that gave a fresh twist to the TDP bribe gate? It contains Naidu's alleged conversation with nominated MLA Elvis Stevenson. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. How are you? Yes, fine, thank you. Manol, briefed me. Yes, sir. I am with you, don't bother. Right, sir. For everything, I am with you. What all they spoke, we will answer. Yes, right, sir. And freely you can decide, no problem at all. Okay. That is your commitment, we will work together, no problem. Right. Thank you. Right. Thank you, thank you. Right. With the TRS escalating its attack on the TDP, party spokespersons are keeping their cards close to their chest. इसलिए जो इंक्वायरी हो रही है वो इंक्वायरी आने के बाद, इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ भी होगा उसके बाद में मैंने उसके ऊपर टिप्पणी करूंगा। तब तक जो है जब तक मामला क्लियर नहीं होता नायडू रिजाइन करना चाहिए इस जॉब से, तब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एविडेंस क्लियर बताते हैं कि नायडू जी इन्वॉल्व है इस केस में, जो ऑडियो एविडेंस है। अभी सारी चीज़ें जो है इंक्वायरी हो रही है, सरकार की तरफ से कुछ बात कहा जाए, जो तेलंगाना का सरकार हो या आंध्र प्रदेश सरकार हो, वो सरकारों के जो है कुछ रिपोर्ट वगैरह आएंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर जो है कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले जो है पहले ही कुछ बात करना इसके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। Now it's a case of stings and counter stings. The TDP also has released a tape alleging poaching by the TRS. KT Rama Rao, though, has openly challenged Chandrababu Naidu for a lie detector test to prove the veracity of their individual claims. कल ही बताया, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं तैयार हूं। अगर चंद्रबाबू नायडू साहब तैयार है तो दोनों भी, अगर चंद्रबाबू नायडू साहब तैयार है तो दोनों भी बैठ जाते हैं लाइव टीवी के सामने और लाइव डिटेक्टर टेस्ट ले लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब ने किसी को भेजा या नहीं, किसी को उन्होंने पैसे की ऑफर किया कि नहीं, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो जाने जाते हैं वो उसमें इंडल्ज किया कि नहीं, उनको आमने सामने बताना पड़ेगा सारे दुनिया के सामने। मैं तैयार हूं। मैं यही कह रहा था कि जो लोग मुझ पे एलिगेशन डालने की कोशिश में हैं और मेरे जरिए मुझे अटैक करके हमारे सीएम साहब को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, इसके बारे में मैंने रिएक्ट किया था और मैंने कहा था कि मैं तैयार हूं लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए। चंद्रबाबू नायडू साहब तैयार है क्या, मैं पूछ रहा था बस। यहाँ पे कोई दूध पीता हुआ बच्चा तो है नहीं, वहाँ ये इलेक्शन एक जारी था और सीधा बात है, सारी दुनिया देखी है, पूरा मतलब देश भी देख चुका है। एक तेलुगु देशम पार्टी के डिप्यूटी लीडर 50 लाख रुपयों के साथ पकड़े गए। इसके बाद में भी अगर वो समझते हैं कि जनता को बेवकूफ बना सकते हैं तो ये सरासर गलत है, उनकी बेवकूफ़ी है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं साफ कि ये जो यहाँ सिलसिला चल रहा है, आज ये कोई दो राज्यों के बीच का मुद्दा नहीं है, दो राज्यों के बीच की कोई यहाँ पे संघर्ष नहीं चल रही है। बात बहुत साफ है, चंद्रबाबू नायडू साहब और उनकी जो पार्टी है तेलुगु देशम, करप्ट प्रैक्टिसेस में वो लोग इंडल्ज उन्होंने किया, उसलिए वो लोग आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको पकड़ लिया और फिर आज एक केस चल रहा है और जो लॉ जो है इस देश का उसके हिसाब से कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है जनता के सामने लाया जाएगा।